Assalamu alaikum. The registration portal will remain open from Sunday, May 17, 2026 till Sunday, June 7, 2026. And test will be conducted on Sunday, July 5, 2026. Any change in test date will be notified through hec.gov.pk and etc.hec.gov.pk. याद रखिएगा, HEC ने हेड जनरल MS MPhil के लिए है और हेड सब्जेक्ट जो है वो PhD के लिए है। तो इस क्लिप के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट आपको पैकेज देंगे जिसके अंदर तमाम चीज़ें आपको आपके गोशवार की जाएंगी। ये कैलेंडर है जो कि आप देख सकते हो कि इसकी जो डेट है वो तो शुरू हो चुकी है, आप देख ही चुके हो इसको, जो कि 17 तारीख से है। ठीक है, 7 जून तक इसकी जो है वो डेडलाइन है इसको सबमिट कराने की, और रोल नंबर स्लिप आपको इश्यू होगी 19/6 को, और टेस्ट डेट जो है वो 5 जुलाई को है, और रिजल्ट जो है वो 31/7 को आएगा। जो मज़ीद कैलेंडर हैं वो आप देख सकते हो कि ये दो हैं जो कि 30/8 से शुरू होगी और दूसरी 8/11 नवंबर से शुरू होगी, और फिर वो इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। ये जो हेड है इसमें आप देख सकते हो कि जनरल है, MS MPhil के लिए, और सब्जेक्ट वाइज जो है वो PhD के लिए है। जी, यहाँ पर अब मैंने पहले भी जिक्र किया था कि दो तरह के हैं हमारे पास, एक है जनरल वाला और एक है सब्जेक्ट बेस्ड जो है, जो कि जाहिर है कि डिपेंड करता है किसके ऊपर कि आप PhD का कर रहे हो या आप MPhil में जा रहे हैं। आप इसके अंदर से 100 MCQs हैं, और ये उनकी परसेंटेज है वर्बल रीजनिंग की फॉर PhD, एनालिटिकल रीजनिंग 15%, सब्जेक्ट कंपोनेंट 70%, और पासिंग मार्क जो है वो 60% है। जो MS MPhil के लिए जनरल है उसकी डिटेल में आगे जाके बयान करूंगा, और याद रखिएगा कि इसके पासिंग मार्क जो है 50% है। और ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन है, यानी कि जिसमें वैलिडिटी जो है वो 2 इयर्स की है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, चाहे वो पब्लिक और प्राइवेट्स हों। नेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल आउटरीच है, सेंट्रलाइज और स्टैंडर्डाइज आइटम जो आपने बैंक वगैरह में जमा करवाना है, आपने मेरिट लिस्ट बनेगी इसकी, जो कि परसेंटाइल बेस्ड रैंकिंग सिस्टम होगा, और कैंडिडेट्स जो है वो अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो ETC पोर्टल के थ्रू करेगा, और ये टेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर होंगे। ये अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि द टेबल प्रेजेंट द HET categories and their correspondence academic disciplines. Each category is designed to evaluate students according to the requirement of their field of study through a combination of English or verbal reasoning, analytical reasoning and quantitative reasoning components. तो पहले हम यहाँ देखते हैं जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड है, हैट 1 कहलाएगा ये, और इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हो कि स्टूडेंट फॉर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी, मैथ्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स काउंट होंगे इसके अंदर, सिंस दीज डिसिप्लिन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग abilities. Quantitative reasoning carries the highest mark 40%, और बाकी जो है वो आप देख सकते हो कि 30% है इंग्लिश वर्बल रीजनिंग के अंदर और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। अब हम सेकंड वाले पे देखते हैं, हेड 2 को, इज डिजाइन फॉर कैंडिडेट फॉर मैनेजमेंट साइंस एंड बिजनेस एजुकेशन। इन दिस कैटेगरी एनालिटिकल रीजन द हाईएस्ट, आप देख सकते हैं, highest percentage of 40%, reflecting the importance of decision making, logical thinking and analytical skill in business related studies. तो बाकी दो जो हैं वो 30% है। हेड 3, intent for student for arts, science, law and clinical and applied psychology. English and verbal reasoning carry the highest proportion of 40%, highlighting the importance of English proficiency, comprehension and critical interpretation and these disciplines. So rest analytical reasoning 35% and quantitative reasoning is 25%. Hat 4
is agriculture, veterinary sciences, biological and medical sciences, physical science, education, media and mass communication. This assessment structure balance English analytical and quantitative skill to evaluate student across a broad range of scientific and professional disciplines. तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 40% दोनों में आ रहा है और यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग इक्वल। मदरसा में अगर हम चले जाएं यहाँ पर तो हेड जनरल है, is specially designed for a student from religious studies and madrasa background. The test structure provide a balanced assessment of English analytical thinking and quantitative reasoning to support their transition into higher education opportunities. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों का 40% है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों 30% आ रहा है। अब हम ओवरऑल को अगर आप देखें, द ओवरऑल असेसमेंट स्ट्रक्चर ऑफ हैट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स. इन हैट 1, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज द हाईएस्ट वेटेज because engineering, math and computer science fields require strong numerical and problem solving skills. हैट 2 में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पर places greater emphasis on analytical reasoning to evaluate logical thinking and decision making abilities, importance in business and management studies. हैट 3 English and verbal reasoning carry 40% मार्क, बल्कि तीनों को अगर आप देखें हैट 3, हैट 4 और जनरल को, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो 40% हैं और डिपेंड बेस हेवीली ऑन कम्युनिकेशन, comprehension and critical interpersonal skills. और हैट 5 is general category, maintain a more balanced distribution among English analytical and quantitative components because it covers diverse scientific, educational and media related religious studies and madrasa background fields requiring multiple competency. So you can see 30% equally. Key education for purpose. The higher education aptitude test, commonly known as HET, is standardized test conduct for admission into MS and MPhil and PhD programs in university across Pakistan. It is also used for awarding HEC scholarships. The test provides a fair and transparent method to assess students seeking graduate education opportunity. Conducting Authority Education Test Council. The Education Testing Council, or ETC, is responsible for organizing and conducting the HET examination. ETC manages the complete testing process to ensure fairness, transparency, and standardized assessment for graduate admission and scholarship opportunities. Eligibility criteria: who can apply for HET. This section explains who can apply for the HET examination. The test is intended for students planning to pursue graduate level for HEC scholarship opportunities. Universities covered admission through HET. Students seeking admission to recognized public or private universities in Pakistan can use HET as a standardized assessment for MS and MPhil or PhD admissions. This creates a unified and reliable admission process. Educational requirements. To appear in that HET examination, applicant must have completed at least 16 or 18 years of education or an equivalent qualification. This requirement ensures readiness of graduate level academic programs. How to apply for HET application process overview. The section explains the complete application process for HET. Application should carefully follow each step to successfully complete their registration. Online registration. Candidate must apply for online through the official ETC portal.
The portal provides registration forms, application instructions, and important updates related to the examination. Fee submission, applicants are required to deposit the prescribed test fee through provided payment methods. Fee submission is necessary to complete and confirm the application process. Upload required documents. Application must upload all the documents and personal documents during registration. Accurate and complete documentation ensures smooth verification and processing. Select HEC category. Student should carefully select the appropriate HEC category according to their academic backgrounds and admission requirement, as such category is designed for specific disciplines. Download roll number slips. After successful registration, applicant must download their roll number slips from the ETC portal. The slip contain important examination information and must be presented on the test day. Standardized national testing system. Major features are the HEC system provides a centralized and standardized testing platform that can be used across universities in Pakistan. Since the results remain valid for 2 years, the student can apply to multiple institutions without repeatedly taking the test. Benefit of the system. The HEC framework improves transparency, merit, and efficiency in graduate admission. It reduces operational burden on universities while creating a nationally standardized and internationally benchmarked assessment system. Overall impact. Overall, that HEC initiative strengthened Pakistan's graduate admission system by improving accessibility, transparency, merit, and academic quality standards across the higher education institutions. Sports and query needs help for query assistance. For any query concerns or technical assistance regarding HEC registration, admissions, or scholarship, applicant can visit the HEC online help portal. This is a letter from HEC regarding mandatory conduct of GRE, HET text, journals, and subject through HEC Educational Testing Council for admission to graduate program level 7 and 8 from fall 2026. And this is aptitude test for the MS MPhil. You can see which I have already discussed these things. And these are the date already mentioned. And there are something how to which I already discussed, how to apply and how to get registration. HET candidates alerts, dates again June 7 and July 5 is the test dates. So thank you. Allah Hafiz.